Hello students, in this video I am going to continue chapter 4 from Hornbill Landscape of the Soul. पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा एक स्टोरी वू डाउजी जो पेंटर हैं चाइना के, उनके बारे में जिन्होंने एक पेंटिंग बनाई एम्परर हुएन सॉन्ग के ऑर्डर पे। और उस पेंटिंग के बारे में आगे मतलब पेंटिंग का एक तरह से आप कह सकते हैं सोल बताया गया कि पेंटिंग को अगर आपको समझना है तो कैसे आपको उस पेंटिंग को देखने से केवल माउंटेन और उसमें जो ट्रीज रिवर ये सब उसको केवल उसका आउटर व्यू देखेंगे तो आप पेंटर के माइंड को रीड नहीं कर पाएंगे। आपको जब भी पेंटिंग देखी तो खास करके ईस्टर्न साइड ऑफ पेंटिंग जिसमें आप कह सकते हैं कि एशियन पेंटिंग, इसमें चाइना उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप एशियन पेंटिंग को देख रहे हैं तो उसमें आपको अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू और उसको स्पिरिचुअली समझना होगा, पेंटर के माइंड को रीड करना होगा, अदरवाइज उस पेंटिंग को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि हुएन सॉन्ग नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने ट्रीज, माउंटेन्स, हिली पाथ्स, पीपल, बर्ड्स ये सब देखा, लेकिन उन्होंने वो केव नहीं देखा जो वुडाओजी उनको दिखाना चाहते थे। वुडाओजी ने वो केव दिखाया, लेकिन उसमें केवल वुडाओजी ही इंटर कर पाए। एम्परर के इंटर करने से पहले उसका डोर बंद हो गया और फिर वो पेंटिंग और वुडाओजी दोनों गायब हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि पेंटिंग को अगर आप नहीं समझेंगे तो पेंटिंग आपकी आंखों के सामने रहते हुए भी उस पेंटिंग का आपके लिए कोई मीनिंग नहीं होगा। तो ये बेसिकली इस चैप्टर में ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब एशियन पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग के बीच में डिफरेंस बताया है। एशियन पेंटिंग स्पिरिचुअल पेंटिंग होती है, स्पिरिचुअल उसमें स्पिरिचुअलिटी को, उसमें रिलीजन को, थॉट को वैल्यू दिया जाता है। जबकि यूरोपियन पेंटिंग फिगरेटिव होती है, इल्यूजनिस्टिक होती है, मतलब लगभग रियलिस्टिक पेंटिंग होती है। उसमें जो पेंटिंग है सिर्फ आपको वही देखना है, उसमें आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रीज माउंटेन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा मीनिंग आप समझ सकते हैं। आप कोई उसको देख करके फॉर एग्जांपल ट्रीज को अप्रिशिएट कर सकता है, कोई इसको उसमें माउंटेन को अप्रिशिएट कर सकता है, कोई रिवर को अप्रिशिएट कर सकता है। सबके अपना अलग अलग, कोई बर्ड को अप्रिशिएट कर, सबके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो यूरोपियन पेंटिंग है उसमें आप सपोज करो कोई ड्रैगन बनाया हुआ है, कोई फ्लाई बनाया हुआ है, या फिर ड्रैगन फ्लाई है, फिर फ्लाई है, मतलब किसी ऐसी पेंटिंग को बनाते हैं जो रियलिस्टिक बिल्कुल रियल लगता है देखने में। लेकिन अब ड्रैगन है तो ड्रैगन उसमें क्या, और उसमें कोई थीम ही नहीं है जिसको उसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, केवल रियलिस्टिक पेंटिंग है वो। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब इस पार्ट में हम डिफरेंस को और आगे समझते हैं। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. As I told students that Chinese painting has been given here example as the eastern part of the painting, Asian painting. Chinese painting is representative. So if you see the painting of China, if you see the painting of India as well, classical Chinese landscape means whenever you see a classical Chinese painting that is landscape is not meant to reproduce an actual view. Means they never focus to represent anything in actual view, means in a realistic view, as what would a western figurative painting means, as it is done in western figurative painting. Western painting is considered as figurative painting as realistic painting. western painting जो होती है realistic painting करते हैं, वो बिल्कुल रियल दिखाई देगा आपको ऑलमोस्ट लगेगा कि बिल्कुल रियल अपने आंखों के सामने आप उसको देख रहे हैं, इतना लाइव बना देते हैं उसको। लेकिन जो चाइनीज क्लासिकल पेंटिंग है, जो एशियन पेंटिंग को रिप्रेजेंट करता है, उसमें कहीं भी एक्चुअल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने की कोशिश नहीं की जाती है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बारो हिज आईज, if you author says that whereas the European painter means if you are watching the painting of an European painter, European painter wants you to borrow his eyes, means European painter wants that you should borrow his eyes. The painter's eyes means you should see the painting according to his own eyes, means according to his own thought, according to the thought of painter. मतलब आपको यूरोपियन पेंटिंग को यूरोपियन पेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर आप बात करें, एंड लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एंड यूरोपियन पेंटर and the painting of European painter and the painter wants that you should see his painting at a particular or a particular painting landscape exactly as he saw it, means exactly as painter saw it from a specific point, from a specific angle. Means European painters do their paintings on a specific angle, on a specific theme, and they want that you should also see their painting with the same theme. मतलब यहाँ पर आपका कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। जो पेंटर ने पेंट किया
उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा, उसके आइज बोरो करने का मतलब कि उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा। जिस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बनाया है पेंटिंग को, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी देख पाएंगे, उसमें आपका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। द चाइनीज पेंटर on the other hand, contrary, the Chinese painter does not choose a single viewpoint, just opposite to the you can say opposite to this European painting. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. European painters wants a specifically a single viewpoint angle, but the Chinese painter doesn't want a single viewpoint. Okay, that you should means Chinese painter, you want to say that Chinese painter doesn't want that you should see his painting with his point of view. You can see the painting of a Chinese painter, Asian painting, by your own point of view. His landscape is not a real one. His landscape is not a real one. It's a real. It's an not a realistic one. It's actually a kind of illusion. It's a kind of imagination. It's a kind of spirituality, and you can enter it from any point, and you can enter into the पेंटिंग ऑफ अ चाइनीज पेंटर ऑफ एनी पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ कि आप चाइनीज पेंटर के जब पेंटिंग को देखते हैं तो आप कहीं से भी, सपोज करो एक पेंटिंग में ट्रीज, माउंटेन, बर्ड्स ये सब बनाए हुए हैं, तो आप उस पेंटिंग को ट्री से शुरू कर सकते हैं, कोई इसको माउंटेन से देखना शुरू कर सकता है, कोई इसको बर्ड से देखना शुरू कर सकता है। इसके ठीक अपोजिट वेस्टर्न पेंटिंग जो होती है उसमें आप सपोज करो कि ड्रैगन फ्लाई बनाया, तो उससे अगर आप आगे के पोर्शन से नहीं देखना शुरू करोगे तो वो आपको पेंटिंग अच्छे से समझ में नहीं आएगी। बट चाइनीज़ पेंटिंग जो होती है वो उसको आप कहीं से, मतलब चाइनीज़ पेंटिंग में आप फ्री होते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करने के लिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने तरीके से उसको देखने के लिए। बट वेस्टर्न पेंटिंग में ये फ्रीडम नहीं है आपको। एंड यू कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, then travel in it, means you can enter into the Chinese painting into that from any point, then you can travel in it, means you can watch the complete painting according to yours. The artist creates a path for your eyes to travel up and down. The artist creates, means from any point of view, if you are entering into the Chinese painting, the artist, you will find a path from that point। मतलब आप जिस भी तरफ से चाइनीज़ पेंटिंग को या एशियन पेंटिंग को देखना चाहते हैं, आपको उधर से ही रास्ता मिल जाएगा उसको देखने का। बट जबकि यूरोपियन पेंटिंग में ऐसा नहीं है, आपको बस एक रास्ता है जिससे आपको देखना है। अगर आप दूसरा रास्ता लेना चाहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा पेंटिंग। The artist creates a path for your eyes to travel up and down, means you can see up and down, you can see the up portion of that painting, you can see the down portion of the painting according to your will and according to your mind. You can see that painting and you can do imagination. The artist then back again you can return thereafter in a leisurely moment and in a very free mind, means you won't have any kind of pressure on your mind. In a very free mind you can view the Chinese painting. This is even more true in the case of a horizontal scroll. This is even more true, means this process is even more true in the case of horizontal scroll. Horizontal scroll is a kind of painting, इसमें पेंटिंग आप सपोज करो कि पेंटिंग एक पेपर में की गई है और उसको फोल्ड किया गया है, जैसे कोई चार्ट पेपर वगैरह फोल्ड रहता है, फिर उसको आप धीरे धीरे हॉरिजॉन्टली ओपन करते हैं। मतलब चाइनीज़ पेंटिंग में इतना फ्रीडम है कि अगर उसकी पेंटिंग है तो आपने थोड़ा सा पेंटिंग को ओपन किया, आप उस पोर्शन को देख लिए, फिर थोड़ा सा आपने ओपन किया, फिर उस पोर्शन को, मतलब इतना फ्रीडम है कि आप उसके एक पोर्शन को आराम से देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, इन विच द action of slowly opening one section, that which I explained also. In horizontal scroll, the action of slowly opening one section, one part of the painting, then rolling it up, then you can roll it up, means you can open the painting to move onto the other part of the painting. It's a dimension of time. It adds a dimension of time also, means time is also very necessary, means it is necessary that if you have opened a particular portion, हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू स्पेंड देयर। अगर बहुत जल्दी जल्दी उसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में, मतलब आपको एक पर्टिकुलर टाइम भी वहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा, तो टाइम डायमेंशन भी इसमें ऐड हो जाता है एशियन पेंटिंग में। टाइम डायमेंशन ऑफ विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, मीन्स दिस टाइम डायमेंशन इज नॉट नोन in any other form of painting. In any other form of painting, European, for example, European painting, Western painting, you don't need to have time and dimension. It also requires the active participation of the viewer, and whenever you are watching the Asian painting or the Chinese painting, you must be very very active. Your participation, the viewers participation, active participation, means you can't observe a Asian painting in a light mood. You have to be very very careful to watch that, to understand that. Who decides at what pace he will travel through the painting, and it also decides the time dimension, the time frame, actually the addition of time also decides that how pace with what pace you are going to observe that painting. A participation which is physical as well as mental, means
you will have to participate physically also, means आपका फिजिकल मूवमेंट भी होगा जब आप पेंटिंग, चाइनीज़ पेंटिंग और एशियन पेंटिंग को देखेंगे। साथ ही साथ मेंटल आपका वहाँ पर एक्टिवनेस भी, पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, मतलब दिमाग भी आपको पूरा लगाना पड़ेगा समझने के लिए। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज eyes, where the western painter wants you to borrow his eyes, but the Chinese painter doesn't want to borrow his eyes. Means Chinese painter is not requesting you that you should see his painting according to his own point of view. You could see the painting of a Chinese painter or an Asian painter by your own point of view. He wants you to enter his mind. He wants you to enter his mind. Means he never wants that you should enter into the painting with his mind. You can enter in the painting of Chinese and the Asian by your mind also. The landscape is an inner one, because the Chinese painting is an inner work, Asian painting is an inner one, means that is a spiritual and conceptual space, and that bases on concept, not on figurative or realistic one. It is on concept and spirituality. This concept is expressed as sensui. Which concept? The conceptual view. This concept is expressed as sensui in Chinese way. Literally, the meaning of sensui is mountain water, which used together represent the word landscape, and this sensui word, which means mountain and mountain water, actually the meaning in English, and it is used in the Chinese painting more than two elements of an image. Actually, students, this paragraph is totally a kind of philosophical paragraph. इसमें पूरी philosophy है, और इसमें कैसे यूनिवर्स का क्रिएशन होता है और यूनिवर्स में किसका क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज़ यहाँ बताया गया है, और मतलब आप कह सकते हैं सृष्टि की संरचना एक्चुअली इसमें समझाई गई है. More than two elements of an image. Actually, more than two elements are needed to create any image. Example आपको यहाँ पे अभी दिखाया जाएगा स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में, आप घबराइएगा नहीं. More than two elements of an image. These represent two complementary poles. Actually, the more than two elements which are needed for the formation of this universe, which are two poles of this complementary poles of this universe. दो आप कह सकते हैं ध्रुव हैं जो मिलकर के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, सृष्टि की संरचना करते हैं. रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स, विच इज कॉल्ड, मीन्स द टू पोल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर the creation of this world, means with the intermingling and with the interface, with the meeting of two poles, this universe is created. This view is called Taoist view in the Chinese language, in the Chinese philosophy. Taoist view represents that there are two poles contemporary which is necessary for the creation of this world. What are the two poles? The mountain is yang, that is called sensui, so mountain water. Mountain is here called yang in Chinese language. Reaching vertically, and what is the structure of the mountain? Mountain reaches vertically means straight vertically towards heaven, that moves towards heaven. Stable, warm and dry. It is very stable. The mountain is very stable, never moves. Warm and dry in the sun when it is sun daytime. While the water, on the other hand, because sensui, the mountain water. The mountain is yang. This is the quality of mountain: stable, warm and dry. And on the other hand, water, which is called yin in Chinese language, which is horizontal, which flows horizontally on the earth, horizontal, and resting on the earth, which rests on the earth, means it is not going vertically towards the sky, it is rests on earth, and that is, it flows that parallel. Fluid, it is in the fluid form, it is in the stable form, it is moist, it is warm, and dry, it is cool. So water has different properties rather than mountain. Now, why how these two things are important for the creation of world? Let's see this. The interaction of the interaction of these two, in, that is water, which is receptive, which accepts feminine, and water is the representative of feminine, okay, the female aspect of universe energy. मतलब ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है ये मेल और फीमेल से बना हुआ है. वाटर फेमिनिन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, और ये पूरे वर्ल्ड के यूनिवर्स के एनर्जी का सोर्स है. एंड इट्स काउंटर पार्ट, एंड वेयर एट इट्स काउंटर पार्ट मीन्स इट्स अदर पार्ट yang, that is mountain, active and masculine, it is masculine. So yang is the representative of masculine,
and water is the representative of feminine, and these two are the poles necessary for the creation of this world. Is of course a fundamental notion of Taoism, and it is the fundamental idea, the basic notion idea of the Taoist theory. What is often overlooked? So I think these two poles are considered in every type of culture and religion. Every culture believes that these two are very important for the creation of the world, for the continuation of the of the world, male and female. But what we often overlook, means most of the religions and most of the philosophies often overlook, they don't care about this. That is one third element which is missed by everyone. What is this? The middle word. The middle word. Word means where nothing is happening, which is a kind of, you can say that vacuum, where vacuum is created. they कह सकते हैं इसको शून्य. जो बीच का शून्य होता है वो अक्सर फिलोसफीज और डिफरेंट फिलोसफीज और जो फिलोसफर्स हैं वो उसको अवॉइड कर जाते हैं, उस वाइड को नहीं पहचानते हैं, जबकि वो वाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, द वाइड इज दैट वेयर देयर इंटरेक्शन मीन्स वेयर दिस टू feminine and masculine meets together with, that is called interaction. So where they meet, and because of that meeting the continuation of this universe happens, that is often avoided by the many philosophy and philosophers. Now this void can be understood very well by the example of a pranayam. This can be compared with the yogic pranayam of practice of pranayam. Means while we do pranayam, तो इससे हम वाइड को अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे ब्रीद इन आप करते हैं तो इसको आप एक बोल समझिए. मीन्स वाइल वी ब्रीथ इन वी रिटेन द ब्रीथ. हम सांस को रोकते हैं, सांस अंदर खींचते हैं, फिर सांस को रिटेन करते हैं, स्टॉप करते हैं, फिर ब्रीथ आउट करते हैं, फिर सांस को छोड़ते हैं. सो मोस्ट ऑफ द पीपल ओनली टॉक अबाउट ब्रीथ इन like masculine and breathe out like feminine, okay, like masculine and like feminine, but they always avoid, mostly avoid the importance of, मतलब जो भी आप प्राणायाम के बारे में लोगों से पूछो तो ये बताएंगे. प्राणायाम यहाँ पे एग्जांपल देंगे स्टूडेंट्स के आप इस वर्ड को अच्छे से समझ सकें. तो कोई भी बोलेगा कि सांस लीजिए और सांस छोड़िए, बट इस सांस रिटेन करने का जो प्रोसेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्राणायाम में. और आप जितनी देर सांस रोकते हैं, आप उसको रिटेन करते हैं, उतना ही प्राणायाम आपके लिए बेनिफिशियल होता है. सो ये दिस मिडिल वाइड वेयर नथिंग इज हैपनिंग एक्चुअली. वाइड मीन्स नथिंग इज हैपनिंग एक्चुअली. According to the people, breathe in, here's a process is happening, breathe out, a process is happening, but in retaining, people think that there is nothing happening, but it is the most important point where we miss actually. If it will not happen, these two processes are totally useless actually. So this is called the middle word. The middle word we often most of the philosophy and philosophers avoid, because that is the moment of interaction while masculine and feminine meet together with, and because of that the continuation of this earth is continued. The suspension of breath means while we release breath in the void, while we suspend means we don't breathe, means we sustain our breath in the void. That is a zero position where nothing is happening. According to very important thing is happening actually, where meditation occurs. It is actually the meditative point. The middle void is essential. It is very very essential. Nothing can happen without it, because without void nothing can happen. Hence the importance of the white, and that's why but even after the importance of the white unpainted space in the Chinese landscape, that's why this example is given. जब आप चाइनीज पेंटिंग को देखेंगे तो उसमें जो पेंटिंग की जाती है और बीच में जो वाइट पोर्शन पेंटिंग का पेज में छोड़ दिया जाता है, इस वाइट पोर्शन को बेसिकली लोग देखते नहीं और समझते हैं कि शायद ये पेंटर ने छोड़ा होगा ऐसे ही या भूल गया होगा वो. बट ये वाइट पोर्शन जो है वही वो वाइट पोर्शन है जो जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, बट वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और वो चाइनीज पेंटिंग का और या फिर ईस्टर्न पेंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. दिस ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स द फंडामेंटल रोल, एंड अकॉर्डिंग टू द पेंटिंग द man also finds a fundamental role in his life in that space between heaven and earth, that is called yang and yin. In the space between heaven and earth, he becomes the conduit of communication between both poles of the universe. Means man is very very important actually between earth and sky, because the man becomes a kind of conduit, means medium between communication of these two poles of universe, the earth one pole and the sky another pole. मैन जो है इसका एक कनेक्टिविटी है, जो वायर्ड है वो मैन है, और मैन ही
के थ्रू अर्थ का मैसेज स्काई को और स्काई का मैसेज अर्थ को आता है और ये मैसेज पास आउट होता है। मैन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो वाइड के जैसा उसका रोल है इस यूनिवर्स में। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, दैट्स वाई द प्रेजेंस ऑफ मैन इज इसेंशियल इवन इफ it's only suggested, though it is only suggested for from being lost or oppressed by lofty peaks, means rather than the importance of man is nothing rather than the comparison of the lofty peaks of the mountain, means अगर आप कंपेरिजन करें मैन की हाइट की और मैन के एग्जिस्टेंस की उस ऊंचे पहाड़ के मुकाबले, तो वो कुछ भी नहीं है मैन का एग्जिस्टेंस। ही इज इन Francois Sang, wonderful expression, but according to Francois Sang, a Chinese philosopher, in his wonderful expression idea, the eye of the landscape, but man is the eye of the landscape, means अगर आप इस पूरे यूनिवर्स को कंसिडर करें तो मैन जो है इस पूरे लैंडस्केप का, इस पूरे यूनिवर्स का आई है, बिना उसके इस वर्ड का क्रिएशन ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है। दिस एक्सक्राफ्ट हैड बीन टेकन लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड। मतलब ये चाइनीज एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी एक बुक है जिसमें से ये लैंडस्केप ऑफ द सोल लिया गया है और स्लाइटली एडिटेड भी है, मतलब बिल्कुल हूबहू नहीं लिया गया है, थोड़ा सा एडिशन करके, थोड़ा सा सुधार करके उसमें। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इन द थर्ड पार्ट।